we have seen that, say for example, this is your Indian plate, we have seen, ठीक है. So Indian plate, faulting, then it break like this. रियलिटी में ऐसा है, ये हो गया ऐसा है. इसके बाद we have this something like this, ऐसा है. Getting my point? Something like this. So your ocean, this is your oceanic water and this is your oceanic water, ठीक है. So this edge, an escarpment जिसको हम बोलते हैं, escarpment मतलब edge of a plateau, edge of a mountain, or edge of any landform. Edge, जिससे for example this is the table, this is the edge, so this is nothing but edge. This edge, this is known as your घाट्स. इसको हम लोग क्या बोलता है, घाट्स. And this one which is near the coast and near the Ghats, between the coast, between the ocean, seashore, ये वाला और ये घाट का बीच में जो है उसको हम लोग क्या बोलेगा, coastal plain. And this is which is inside under the water ocean, this is known as your continental shelf, ठीक है. तो what we are going, don't be confused. Continental plain is different, Ghat is different. Ghat is the edge of a landmass and this is the plain, this is a plain area. Similarly, this is your Ghat in the eastern side, this is your Ghat. Now what happened, coastal plain can be formed in two different ways. One, it can be the result of your submergent and one can be the result of the emergent. In case of the eastern side, there is a continuous deposition of the mighty rivers like Brahmaputra, Brahmaputra, Ganga, Krishna, Kaveri, Godavari, ठीक है. This all resulted into the coastal plain. Here a coastal plain is formed. This is the example of emergent coastal plain. Getting my point? And this coastal plain was formed due to the faulting system. Now, this sudden landmass go down. So therefore we call this as a submergent coastline, या तो coastal plain. Are you clear? What is a Ghat? The edge is your Ghat. This plain area, this is your coastal plain. This is continental shelf. In the eastern side, this steep, this is your eastern Ghat. Eastern Ghat is a very low, बहुत कम है वहाँ पर. And we have the emergent coastal plain. ये समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं. Now what we are going to study? We are going to first we will study the Western Ghat. Then we have to study the Eastern Ghat. Then after the completion of that, we will study about this coastal plain. All the lake like Chilika Lake, Puliket Lake, Annamudi Lake, yeah, Annamudi Khayal, yeah, what called Bemnard Khayal. These all are in the coastal plain. They are in the coastal plain. They are not attached to the Ghats. So don't be confused. Okay? So when we study the coastal plain, we study the Pulikat Lake, we study the Chilika Lake, या तो Bemnard, या तो Annamudi Khayal, ये सब हम लोग करता है. Are you clear about this? So we will first do the Western Ghat का क्या क्या है. What are the names, local names of the Western Ghats? ना, example Sayadri is there. Getting my point? Example, Nilgiri hills are, Nilgiri mountain range are there, Southern hill complex are there, na? Then Shivroi is there,
Palnad is there, so that we have to see. Getting my point? So you can draw a diagram with me. First we will draw. we can start from the Gujarat. बाकी इतना जरूरत नहीं है. That much is okay. Now Western Ghat, this one, that will start from the Tapi river in the Gujarat. This is your Tapi river, and from here the Western Ghat will start from here. यहाँ जाएगा. This is in the Maharashtra. Here we will find one gap. Can you name the gap? Very famous two gaps are there in the Maharashtra. The two most famous gaps are there. Natural passes. This pass connect the Nasik with the Mumbai and the Bombay with the Pune. The two important passes are there. Now why the passes are very important here? Suppose if it is this is getting Western Ghat. Your Mumbai is here. Mumbai is here. Okay? And say for example your Nasik is here. Nasik. Now to reach the Mumbai, you have to cross all these mountain ranges, sharp mountain ranges को cross कर. That is very difficult. So therefore there is a natural pass here. Natural passes are there. You can directly Nasik to Mumbai you can come. So that two important passes are there. Okay? So one pass is here, another is there. Then in the Western Ghat we have one more important pass are there. Pass is there here. Can you name these passes? नहीं पता आपको. ठीक है. So first draw this. We will do this all. This Ghat in the Maharashtra area. In the Maharashtra area, we call it as a. Anyone? क्या बोलता है? Sayadri. This is the Sayadri. The local name for the Western Ghat in the Maharashtra area is known as Sayadri. Okay? So up to here we have the Sayadri Western Ghat. Okay? And from here till up to here we call this as a Nilgiri. Nilgiri. Are you clear? Western Ghat is known as Sayadri in the Maharashtra area locally, and Western Ghat is known as the Nilgiri hill in the Karnataka, Tamil Nadu and even the Kerala area. This is known as the Nilgiri. Are you clear about this? So up to here we have the Western Ghat. And here we will have a pass. Then here two more hill complexes there. Okay? The first is your Annamalai hills. These are also the part of the Western Ghat. Remember, Eastern Ghat कहाँ से शुरू होगा? Eastern Ghat from Sayadri. Eastern Ghat is this. I'm talking about the Western Ghat. Nilgiri is the part of the Western Ghat, and the southernmost three important hill ranges. One is Annamalai, second is Palini Hill, and third is Cardamom Hill. Okay? These three hill is known as Southern Hill Complex. Are you clear? गोवा क्या? Ghats.
घाट, यस, गोवा इधर है, नीचे में है, कोस्टल प्लेन में है। हाँ, गोवा ये है आपका, यहाँ पर है, तो दिस इज वेस्टर्न घाट। गोवा का ये वाला देखो, गोवा आप रीच कैसे करता है, गोवा कभी जाएगा तो आप देखो आगे पूरा वेस्टर्न घाट को उठता है, फिर इसके बाद गोवा नीचे नामता है, गोवा में पहुँचता है। ठीक है, गोवा का रास्ता अरुणाचल जैसा है, ऐसा पूरा पहाड़ी से जाता है, लेकिन ब्रॉड है, यहाँ तो पतला है, तो ब्रॉड ऐसे ब्रॉड होके नीचे जाता है। ये पूरा वेस्टर्न, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई वाज स्टडिंग इन हियर अमरावती, तो हमको जब गोवा जाना था तो यहाँ आया पूरा वेस्टर्न घाट का, यहाँ से पूरा हम ऐसे ऐसे चक्कर मार के फिर गोवा में घुस गए। गोवा जाने के लिए आप ये पासेस से भी जा सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, पासेस से भी जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, देन दिस इन सह्याद्री वी हैव टू इम्पोर्टेंट passes. Here we have the Mumbai. Mumbai is here, and this pass is known as, pass 1 is known as Al Ghat pass, and this second is your Bhor Ghat. Bhor Ghat, ठीक है, and it connects. Here we have the Nashik. Nashik is here, and here we have the Pune. ठीक है, this pass is known as your Talgat pass, and second is your Bhorgat pass. ठीक है, very important. In the Himalayan region we have many passes. ठीक है, so you cannot predict कि कहाँ से आएगा कौन, ठीक है पर, but in the peninsular India, basically in the western side, we have the most three important passes: Talgat, Borghat and Palgat here. Palgat. This is the third one. Palghat. Now why Palghat is important? Because कोस्टल एरिया से या केरला से वेस्टर्न घाट आ जाता है ना, तो यहाँ से आप अगर तमिलनाडु जाना है तो ये पास से होके जा सकते हैं सीधा। एंड दिस पास ऑल्सो प्रोवाइड ए पार्ट वे फॉर द साउथ वेस्ट मानसून। ये घाट से साउथ वेस्ट मानसून सीधा नीचे चला जाता है, जो यहाँ से राइज होकर बारिश देगा ना, लेकिन जो अंदर जाएगा वो तमिलनाडु का एरिया में बारिश देता है। आर यू क्लियर? सह्याद्री, नीलगिरी, नासिक एंड पुणे, ठीक है। नाउ लेट्स फाइंड आउट सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द सह्याद्री। क्या क्या होगा यहाँ पे? सह्याद्री में द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द सह्याद्री इज हियर, नासिक का जस्ट पास में, आप मैप में दे सकता है यहाँ पे। वी हैव दी कलसुभाई, कलसुभाई, हैव यू फाइंड द कलसुभाई? कलसुभाई, कलसुभाई, द हाईएस्ट पीक ऑफ सह्याद्री, हैव यू फाइंड हाईएस्ट पीक ऑफ कलसुभाई? ठीक है, सह्याद्री इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फ्रॉम सह्याद्री 3 important rivers, source of the 3 important rivers start is from Sayadri only. If you locate the Godavari river, Godavari बोल के मिलेगा, Godavari the source or the Godavari river, it originate from Sayadri mountain range, ठीक है, and the place is known as your
वहाँ लिखा होगा, देख लो एक बार, त्रिम्बकेश्वर, त्रिम्बकेश्वर लिखा है, नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, वी विल सी इन दी, ठीक है। तो त्रिम्बकेश्वर गोदावरी यहाँ से है, सह्याद्री माउंटेन हिल रेंज से। इसके बाद भीमा होगा, भीमा रिवर, भीमा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा, यू विल फाइंड भीमा शंकर बोल के, देयर इज अ प्लेस इन सह्याद्री। भीमा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ Krishna river, and the what called Krishna originate from Krishna. Krishna also originate from the Krishna river, also is from the Western Ghat, na? And the name that from where it originates is known as your Mahabaleshwar. Mahabaleshwar. We will see. These are the important source. At least गोदावरी का सोर्स को आपको जानना है, कृष्णा का सोर्स को जानना है, कहाँ से एग्जैक्ट निकलता है। ओके, वी विल सी इन दी रिवर सिस्टम, बट एज ऑफ नाउ आई एम टेलिंग यू व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ द वेस्टर्न घाट और द सह्याद्री। Sayadri, here we have the Kalsubai, the highest peak of the Sayadri. We have the two important passes, na? We have Tal Ghat and the Bhor Ghat. Tal Ghat because it connect Mumbai from the Nasik, and this Bhor Ghat connect from Mumbai to Pune. It's very important. Getting my point? यहाँ कोई problem नहीं है। तो now look on the ये what called Nilgiri Hills. Nilgiri Hills mountain ranges में क्या important होगा? Nilgiri Hills में we have one important pass here. This pass is important because it connect the Kerala area ना from the Tamil Nadu. You can go from here. ये हो गया पालघाट, ठीक है। And in the Nilgiri from Karnataka to Tamil Nadu or to Kerala यहाँ पे। Nilgiri is the area of the very dense forest. यहाँ पे बहुत dense है। We have many wildlife protected areas here. जैसे कि for example Nilgiri Biosphere Reserve is here, ना? And in the Nilgiri you locate one mountain peak, डोडा बेटा बोल के, डोडा बेटा मिला, डोडा बेटा। डोडा बेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी, हाईएस्ट पीक ऑफ द नीलगिरी। आर यू क्लियर अबाउट दिस? कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दिस नीलगिरी एरिया, एज यू कैन सी, दिस ईस्टर्न घाट, दिस इज अ सिवरॉय, दिस ईस्टर्न घाट इज मीटिंग द नीलगिरी हिल्स एट दिस एरिया, ठीक है। देयरफॉर वी कॉल नीलगिरी एज द, क्या बोलता है इसको, नीलगिरी एज द joining point or the meeting point of the Eastern Ghat and the Western Ghat. Nilgiri is the meeting point of the Eastern Ghat and the Western Ghat. Below this, in the southern, we have the three more important hills ranges: Annamalai, Palani, and the Cardamom. Very important. Question will ask, arrange from north to south or to south to north. First, Nilgiri, Annamalai, Palani, Cardamom hills. ठीक है। Annamalai, look at the Annamalai, you will find one mountain peak here. हाँ, अन्नामुडी जो भी हो, अन्नामुडी peak. What is the height? 2695 meter. Annamalai, it is the highest peak of Annamudi is the highest peak of Annamalai hill, and it is also the highest peak of the entire peninsular India. Remember, don't be confused with the Doda Beta. Doda Beta is the highest peak of Nilgiri hills. Kalsubai is the highest peak of Sayadri, and Annamudi is the hill of this southern hill complex. But Annamudi is the highest peak of the entire peninsula as well. ठीक है? So it is the highest peak of entire peninsular India. Just for prelims only. Otherwise have no importance. हाँ, कोई important है, मेंस में कुछ नहीं। हाँ, आपको इंफॉर्मेशन होने से अच्छा है। You can otherwise just factuals only. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है बोलने से, द डिफरेंस बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट, दिस आर द फैक्चुअल्स, ठीक है। हैव यू रिटन दिस? नाउ Nilgiri, what are the importance of the Nilgiri hills? First of all, Nilgiri is famous for its biodiversity, number one, ठीक है। It got the UNESCO, पूरा वेस्टर्न घाट यूनेस्को का लिस्ट में आया है, गेटिंग है, गेटिंग माय पॉइंट। एंड नीलगिरी हिल्स में वी हैव मेनी प्रोटेक्टेड एरियाज, जिसमें नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नाउ नीलगिरी इज डिराइव्ड फ्रॉम one flower. Have you heard about one flower known as the नील कुरंजी? नील कुरंजी बोल के one plant is there, one tree is one flower is there. Now why this नील कुरंजी is important? Because नील कुरंजी flowered after every 12 years. 12 साल के बाद एक बार ही फ्लावर होता है, तो जब फ्लावरिंग होता है तो सब उसको देखने आता है, वेरी फेमस। तो दिस इज नील कुरिंजी, ये नील कुरिंजी के नाम से ये नीलगिरी हिल्स का नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। आर यू क्लियर अबाउट द कौन? नाउ सह्याद्री इज इंपॉर्टेंट फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो, ठीक है। हियर वी हैव द प्लांटेशन क्रॉप्स, यहाँ पे मिलेगा। द मोस्ट फेमस बीइंग द कॉफ़ी। कॉफ़ी कहाँ पे मिलता है? कर्नाटका एरिया में हाईएस्ट, ठीक है। चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट बोल के वहाँ पे वी हैव द हाईएस्ट कॉफ़ी प्रोडक्शंस वहाँ पे होता है, गेटिंग माय पॉइंट। देन बाबा बुदान आयरन और ये भी फेमस है यहाँ पर, ठीक है। वी विल सी दैट। तो ये समझ में आ गया। तो बस अभी के लिए आपका जो लोकेट करना है यही है, 2 पासेस को आपको जानना है, कलसुबाई को जानना है, सह्याद्री में एटलीस्ट यू शुड नो, सह्याद्री में आपको बाबा बुदान हिल्स को जानना है। बाबा बुदान देखो मिला हुआ है, बाबा बुदान हिल कर्नाटका में, ठीक है। देन दोडा बेटा, देन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, देन अन्नामुडी पिक, देन दिस 3 साउदर्न हिल कॉम्प्लेक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है? हैव यू ड्रॉन दिस? ठीक। नाउ वी विल डिस्टिंग्विश बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट। ये आपको आएगा मेंस में। द मिडिल सेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट runs through the state of Karnataka and Tamil Nadu. Full stop. The important mountain here is Baba Budan Hills, and Baba Budan Hills known for coffee, लिखो Baba Budan Hills known for coffee, and कुद्रेमुख आयरन ओर, सुना है कुद्रेमुख आयरन ओर? कुद्रेमुख आयरन ओर माइंस के लिए फेमस है ये वाला एरिया। नेक्स्ट, नीलगिरी which is part of Western Ghat is a meeting point oblique junction of both Eastern and Western Ghat, दोनों जहाँ पे मिलता है ना, Eastern and Western Ghats. This region is known for हिल स्टेशन बताओ यहाँ का। एक देखो ऊटी देखो नंबर 1, एंड नंबर 2 बायोस्फीयर रिजर्व को भी देखो, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ऊटी। उड़ायामंगलम बोल के लिखा होगा, उड़ायामंगलम लिखा है ना। दिस रीजन इज नोन फॉर ऊटी, ब्रैकेट में लिखो उड़या मंडलम। Number 2, Nilgiri Biosphere Reserve. The highest peak of Nilgiri is Doda Beta. The Nilgiri are separated from Southern Hill Complex. The Nilgiri are separated from Southern Hill Complex by Pal Ghat.
by Pal Ghat, comma, it is also connecting link between Kerala and Tamil Nadu. Next, the Southern Hill Complex. Question आ गया तो the Southern Hill Complex is a part of Western Ghat, Eastern Ghat बोलने से Western Ghat है, don't be confused. Western Ghat, Eastern Ghat technically start from this पाल घाट से शुरू होता है, ठीक है. The Southern Hill Complex consists of Annamalai Hills, where Annamudi is the highest peak of entire peninsula, full stop. It is famous for Indira Gandhi Tiger Reserve. घर जाके देख लेना उसको. Next, the other mountain is Palani Hill. Palani Hill में here one famous hill station is there. देखो तो which hill station is there? Kodaikanal. मिला? Kodaikanal. The other mountain in Palani Hill, where the famous hill station of Kodaikanal is located. The southernmost mountain is Cardamom Hill. You know cardamom? Elaichi. Cardamom Hill, which is famous for spices. Full stop. Bus. Next, Eastern Ghat का ये इसको भी कॉल लेते हैं शेवरोई. मिला? शेवरोई. जाबड़ी. This is your Jabdi. मिला? Then Palkonda मिला? Palkonda. Then Nallamalai मिला? Nallamalai. Not important ना? Not at all important. कभी नहीं पूछता है, ठीक है. What is important is वेस्टर्न घाट में देयर विल बी सम माउंटेन पिक्स ना, उसको पूछेगा, अदरवाइज नॉट इम्पोर्टेंट.